Namaskar, good evening. I hope all of you are safe, all your families are healthy, all your loved ones are healthy. Every one of us is trying to maintain social distancing, and also importantly, everyone is trying as much to help as possible. आज हमारे गेस्ट हैं वो हैं विराट कोहली. Hello, sir. Champ, how are you? I'm good. How are you? I'm good, man. I'm good. Good to First see of you. all, Champ, yeah, same here. Thank you so much for doing this, yeah. No, it's a pleasure. It's a pleasure. We keep talking and keep fooling around. So why not have some fun with our fans? Yeah, exactly. Done. Chaliye, done, Champ, done. let's start. Okay. So the first thing that I want to ask you, Virat, is money was always a fight growing up in my household. And I know for a fact it was almost the same at your house also. Now, what was the amazing moment when you realized that you can make money doing what you love? Because not many people have that. Yeah, pretty similar. I guess माहौल बहुत सेम था. एक मिडिल क्लास फैमिली में आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. प्लस मुझे याद है मैंने अपने फादर को बोला कि आई थिंक आई प्ले वेल, आई लव द स्पोर्ट. एंड मेरे दोस्तों ने भी बोला कि ही इज गुड इनफ, यू शुड मेक हिम लर्न प्रोफेशनली. तो गए एकेडमी में एनरोल कर दिया. उसके बाद द इनिशियल चैलेंजेस वर मंथली एकेडमी फी, अपना गियर खरीदने का, सामान खरीदने का पैसा. देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई प्लेड स्टेट क्रिकेट पहली बार, तब पर मैच पैसे मिलने शुरू हुए. अच्छा. दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार इफ यू कीप गोइंग अप, you will obviously make a career out of this at some stage, because you are totally committing your life to it. And my only aim was कि I have to give everything that I have. उसके बाद I will see कि अगर career बन गया है कि नहीं, but मुझे ऐसा कभी डाउट नहीं हुआ कि अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा. क्लैरिटी थी कि यही करना है. एंड आई वेंट ahead with it. फिर स्टेट क्रिकेट खेलते when I ended up playing under-19 India, that's when I thought कि okay, because the first tour fee was a decent amount, like a big amount at that age for me. I was 16 when I played my first under-19 tour, and that was to England. तो वो जो tour fee मिला, उसके बाद my father opened an account for me, जाके joint account खुलवाया. तो तब मुझे थोड़ा realize हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा path इधर जा सकता है as an individual. I can really make this into my career, and it's everything is going to unfold well if I just keep working hard. तो वहां से I think वो जो पहला टूर था, वहां से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार it is not going to be a waste of my time. Whatever मेहनत I have done, if I keep going forward, everything will be taken care of. तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, हाँ. पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए. हाँ. जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हाँट सको, हाँ. तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था. मैं बसों में जाता था. एकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए. साइकिल भी थी मेरी. साइकिल में पीछे वो कैरियर बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मटका. हाँ, कैरियर में किड बैग ठूस के और फिर उस पे जाता था. फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैट साइड में डाले होते हैं, तो उस पे भी जाता था. बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली, जो पास की जगह होती थी. बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे, बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट. ही वाज अ लॉयर, और उनका जो रोज का काम था हाई कोर्ट में था. ही हैड अ चेंबर. सो वहां पे कोटला पास में था, तो मुझे छोड़ देते थे वहां पे गाड़ी में कभी कभी. वरना बस, ऑटो, ये सब तो रेगुलर था, या किसी और से लिफ्ट मांग लेनी, ये सब चलता रहता था. डीडीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी अगर पकड़े गए तो? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया. हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था. हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे. हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ क्या है, स्टाफ है. वो किसका स्टाफ है? मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया. वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा, मतलब उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे. मैं उतर गया बस से. मैंने कहा भाई भागो यहाँ से. तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया. नहीं, मैंने देखा बहुत है होते हुए.
उन लड़कों की अलग ही और कॉन्फिडेंस होता था यार, उनसे वापस काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते फिर। I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार my father was very clear कि पढ़ाई में उनका obviously उनका focus पढ़ाई में था, but he was very clear कि you have to study along with playing, and only when you can say कि I am 200% confident that I am going to be able to make a career out of this, only then will you solely focus on just doing one thing. But till that time I wanted to work hard in both. तो उसके बाद जब results obviously आने शुरू हुए, and you know under 19 tours happened, and then he saw कि cricket ज्यादा हो रहा है, he stopped saying anything to me, because लोगों से भी सुनते थे, कोच से फीडबैक आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये चांस देना चाहिए, तो सपोर्ट मुझे काफी मिला। प्लस दूसरी बात ये थी कि आई मेंशन्ड इट बिफोर आल्सो कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में, यू नो, बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब बहुत चीजें होती है, यू नो, मेनी फैक्टर्स हैपन वेयर थिंग्स आर नॉट फेयर, आई वुड जस्ट पुट इट लाइक दैट, आई वुडंट गो इलैबोरेट इट टू मच। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी था जहां पे obviously a certain someone chose to, you know, step out of the rules and say कि ये सिनारियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। सो ही अंडरस्टूड, एंड ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े, वैसा हाल था उनके घर में, वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले। तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज, ही डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या है कि यहाँ कर दो वहां कर दो। ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें नहीं खिलाना, ये सब मैं नहीं करूंगा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया, मैं, यू नो, आई वाज ब्रोकन, बट दैट टॉट मी समथिंग दैट बॉस, ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा। So that lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a, you know, life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत आसान होता है, so those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है। So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक सर्टेन माइंडसेट हो सकता है कि नहीं यार आप फोकस करो, एक जॉब होनी चाहिए, यू नो, दैट इज फेयर, बट टू हैव द करेज टू से नहीं, अच्छा इसको करने दो फॉर अ व्हाइल, आई थिंक दैट इज ऑल यू कैन आस्क फॉर एज अ चाइल्ड, सो ही गेव मी दैट फॉर श्योर। सो चैम्प, आई एम श्योर यू मिस हिम ऑलमोस्ट एवरी डे इन योर लाइफ, बट वाज देयर अ मोमेंट आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा हूं? Is there any moment that you thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today, when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see what he was trying to build. Was there any moment? And I'm sorry if I'm making you emotional. No, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. Uske baad se yaar, realize until something big happens in your life, you sort of, I was 18, and उतनी maturity नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि, you know, क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you know, you need to move forward. So I kept doing that, but when I played for India, when things started, you know, going well, I started thinking yaar कि what is it really that I could have done which meant something? And the only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is ki, you know, whatever my father did for our family, for me, for, you know, all the brothers and sisters, children, for my mother, everything, for his side of the family, sabko samalna and all that. The only thing I could have done for him was give him a life of, you know, great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने में निकल जाए, and you know, then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप, you know, all that मेहनत, you feel like यार, I really feel grateful to God कि यार whatever I did, you know, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए, you can go spend time with them, but these are the things you can do
कि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ मिले, कोई टेंशन ना हो। तो वो एक मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, तो that's the biggest gift I could have given him back. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. No, it's fine. I mean, I remember him in positivity. I never Which is good. feel like I feel sad or emotional or something. Sometimes you miss him in a emotional way, but I always think positive, क्योंकि that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहां आप अपना फोकस खो सकते हो, जहां पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहां पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार I have no other option in life. I have to keep going on this path. So yeah, I remember him well. That's well said. चलो from that note to a happy note, my second question to you is, हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं, and of course middle class family again. So जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख थर्सडे को, followed by जबान संभाल के, and then अलिफ लैला, and then चंद्रकांता, and then नया नुक्कड़ ट्यूसडे को, विक्रम बेताल। So विक्रम बेताल, ओहो तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा। मेरे को लगता है ये हर दिन क्यों बोलता है ये यार, वो जो ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार, अनबिलीवेबल। लो 90s का टाइम ना, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता। वो फैंटम सिगरेट टॉनिक सिनकारा पे जाके हैं, हमदर्द का टॉनिक सिनकारा किस्मी बार खरीद फैंटम की सिगरेटें खानी, ये सब वापस नहीं आ सकता। सिप्सी पीनी 1-1 रुपए वाली, संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेलते, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने ठंडी ठंडी। क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो, फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के। अरे वो वक्त ही अलग था, कमाल। तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज थी जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what Virat Kohli was then to now, where he can get whatever he wants. What is the one thing that has stayed with you, or two things, or many things that have stayed with you as a? यार I think वो एक कहावत होती है ना, you should never forget where you came from. तो मेरे जो बचपन निकला है एक सोसाइटी में रहने का, वेस्ट पंजाबी बाग में, प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का, वहां से एक ही चीज मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ ना वहां के, आई स्पीक द सेम लैंग्वेज आई स्पोक टू देम इन दैट टाइम, एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट मार्कर दैट यू आर नेवर अवे फ्रॉम हु यू आर। अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था, राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट खेल के आए और अभी घर गए और ये अगले दिन मिल रहे हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोलता वो ब्रो हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ यू डू, मैं ऐसे बात नहीं करता उससे। मुझे पता है, मुझे पता है। I don't suddenly become posh with him because to me living life खुल के is the only way to live। और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करो, वो एक वो I don't believe in having a layer on top of your behavior to feel very sophisticated या come across very balanced। वो अपने आप हो जाता है where you are in a place to talk about something which is serious, it means something। Obviously you won't talk like अबे भाई बताऊं तेरे को क्या हो गया, पता है फिर तेरे को ना ऐसे करना चाहिए। Obviously you will have you'll be more articulate, you'll explain it well, but जहाँ पे you are yourself, you should be yourself। Where were you exactly when Amir Sohail hit Prashad for a 4, trash talked, and then saw his off stump, sent for a cartwheel, right the next ball? Where were you? Well, this is an iconic moment. Everyone knows about this. I was at home. Obviously iconic moment, मतलब मैं वैसी सेलिब्रेशन करी थी जैसे मैं आज करता हूँ। मुझे लगा exactly वो वैसा, वो जो बोल्ड है ना, उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग क्लीन बोल्ड हमारे लिए तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कहीं भी नहीं है। एग्जैक्टली तो जब बड़े हो रहे थे तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बेवकूफियां की, पर जो हम स्पोर्ट्स में थे वो अपने बेवकूफी को एक नॉच हायर ले गए। सिंपल। ऐसे कोई दिन याद आता आपको जहां पे लगेगी यार मैं क्या कर रहा था यार, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर रहा था? समथिंग दैट वाज
maybe dangerous or maybe stupid, and thank God you got saved, but something which you thought now, which you think now कि यार मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था यार ये, you know, or were you always right and you didn't reach that level? नहीं, क्या बात कर रहे हो, बड़े हो रहे थे क्या? हम भी बड़े ही हो रहे हैं अभी भी। हो क्या रहे थे? हम बहुत बड़े हो गए, अभी भी हो ही रहे हैं। इनको थोड़ी ना पता है हम कैसी बातें करते हैं। मम्मी का नाम लिया, देखो। अरे वाह, क्या? हेलो, हाँ माँ, हाल ठीक है। मैं वो लाइव चैट कर रहा हूँ सुनील छेत्री साहब से, हमारे फुटबॉल कैप्टन। हाँ, आपको फोन करता हूँ वापस। ओके, अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको करता हूँ, इसके जब खत्म हो जाएगा उसके बाद करता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। ओके बाय। ऑल वेल? हाँ ऑल वेल। वो बोल रही है वहां पे एयरपोर्ट वगैरह का कुछ रिलैक्सेशन हुआ है कुछ, तो कह रही है अब तुम भी आ ही सकते हो। मैंने कहा अभी मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, मैं पता करके आपको फोन करता हूँ। I have a small rapid fire. हाँ, I don't have to ask you to be rapid because you're always like that. You're always feisty. So let's see. The first one, Virat Kohli saab. The one knock in international cricket you wish you had played. Sharjah 98, Desert Storm. Which one? The first one, same final or the final? First one. The जब 140 qualify something. किए थे। हाँ. हाँ, जब क्वालिफाई किए थे। First one. Man, I imagine I don't watch cricket in between, but that match I remember, man. What a game. What a game. Yeah. Okay, the second one. The undisputed all-time king of backward point is John T. Rhodes. Didn't even think. Okay. How good was he, man? I saw a video where he got man of the match for 7 catches against West Indies. आप वो छोड़ो, आप अभी लेजेंड्स का मैच हुआ था ना बॉम्बे में, 2 मैचेस हुए थे। अच्छा। वेस्ट इंडीज एंड आई थिंक इट वाज मिक्स, बहुत कंट्रीज के आए थे प्लेयर्स, एंड सचिन पाजी वाज देयर, ब्रायन लारा वाज देयर, एवरीवन वाज प्लेइंग टुगेदर। जस्ट लुक एट हिम इन दैट, ही इज व्हाट 45 प्लस। Yeah. I saw him diving for a ball in that game. He flew. I just saw someone flying. I was like, ये कोई youngster खिलाया हो क्या? बाद में दिखाया Jonty and you're still running around like that. Unbelievable. Best ever. Yeah. All right. The third question. One player from the Indian team with the worst possible football touch. Because I know you guys play warm-up football. So who has the worst football touch? अभी? हाँ. कुलदीप यादव। वो इतना बड़ा फुटबॉल का फैन है, और नेमार का इतना बड़ा फैन है। मतलब जब वो सिर्फ या तो ऑनलाइन खेल सकता है या देखने में लगता है यार बड़ा फुटबॉल का वो लग रहा है प्रोफेशनल, इसको बहुत आइडिया है, बॉल दे दो सामने, उसके बस की नहीं है। फुटबॉल नहीं, चांस ही नहीं है। Okay, this is a good one. You need 3 runs of the last ball. Okay? And you can choose the bowler. I'm giving you 2 options. One is Shane Warne and one is Waqar Younis. And why I'm giving you is because I know about these, I've watched them. So either you can pick Shane Warne or Waqar Younis, and you need 3 runs of the last ball. I know it's a difficult task, but who would you choose to face? To defend? Yeah, to no, face? not defend. You have to, yeah, you have to make 3 runs to win the match. And you can either choose Shane Warne to face for the last ball or Waqar Younis. I would choose Waqar Younis because Shane Warne hardly bowled in the death. Firstly, secondly, okay. I would believe in myself in hitting his Yorkers. I would back myself. So and were you able to play against him? Because I think it didn't match his retirement. Okay, but you didn't play against Waqar Younis. No, he made me look stupid in IPL 2009. Shane Warne. Okay. Then there was a game in Rajasthan, and he was the captain in 2011. I played decent there. I didn't hit him. He didn't get me out, but we won the game. I remained not out. And, you know, that's when he told me something after the game that never bite back, never say anything back to the bowler. Obviously, I didn't listen.
because Clearly. मेरी गाड़ी उसी से चलती है, तो मैंने कहा चलने दो. Okay, this is a good one because I know you are a fan also. One Sachin Tendulkar stroke you could steal overnight and make your own. Wow, there's so many. Yeah, I thought so. You know the ease with which he played the lap shot, that delicate Sit and behind. ऐसे. Yeah. Just, unbelievable. I never saw him miss it. Unbelievable control. There was one where he used to bat like this behind. Yeah. No, that MS one. also does it. That one. MS also does it very well. Yeah. But he was the one who started it, like, you know, Yeah. tapped it on the head. But वो जो delicate वाला था एक lap shot, that was amazing control. I could never play that shot well, so I would look to steal that. Yeah. Okay. Yeah. Okay, the next one. The one mindless movie you can watch over and over again for laughs. अंदाजा Prime Master go. कुछ आया तो लेकर जाऊंगा. उसके ऊपर कुछ नहीं है. Okay, the next one is, I think I know the answer, but I still ask for people. The one non-cricket athlete who makes your jaw drop when you watch him or her live perform. Live as in on TV? On TV. You know the answer. Yeah, I know. But I want people to know about it. Please go on. Cristiano Ronaldo. Yeah. Now, before I go to the next question. नहीं, मैं explain भी कर देता हूँ. There are many great. That's why I want it. Yeah. All over. There are many great athletes, and there are people that you've looked up to. There are people that, you know, play in a manner that is amazing. But for a guy to turn up for big games that regularly, and you know, the thing that stood out was he went to Juventus, and वो Champions League का game था against Atletico Madrid. They lost 2-0. True. और घर पे खेलना था, and for a guy to say 2 days prior to the game, all his friends that come to the game, it's going to be a special night. True. The conviction for that guy to say that we are going to go through and score a hat-trick and take them through, that to me is beast mentality. I don't think that out of world sport, I could count people on one hand that can claim to do something like that and then go out there to do it. That mental strength for me is inspiring every time. It's unbelievable. The song that defined your childhood. या जो बचपन का गाना याद हो आपका? बचपन का गाना. Wow. पंजाबी गाना, of course. कोई भी दोस्त, कोई भी. काला चश्मा. वो मुझे बहुत पसंद है गाना. I could dance to that song at a party, at a wedding. I could listen to that before a game. I could add chilling at home. किसी फेस्टिवल लगा दो, कुछ भी कर लो. वो all-purpose song था. I used to love it. True. I used to love it. You know, Champ, there's something that I want to tell you was, I've read so much about this in news, and I also know from you in personal way that you give so much credit to Anushka for changing fair bit of things, important things in your life. Can you give us a lowdown on a pre-Anushka Virat as compared to a version post-Anushka? Can you tell us what are the, if you can, and I know it's a very personal thing, but whatever you can share, how, because 2014 का IPL when you thought कि मैं body change करूंगा, वो भी उसी time पे था. Anushka came into your life भी 13-14 के time पे था. So all this good transition happened then. What would you say about Virat Kohli before Anushka and Virat Kohli after Anushka? I would, the reason why I say that when she came into my life, everything that was negative in me changed for good, is because पहली बात तो I've always mentioned this, that before I met her, I was very self-centered, very focused on कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अपना comfort zone बना के रखना है. Comfort zone was a big thing. You know, जो चीजें मुझे पसंद है, जो मुझे खाना है, जो ये, when you meet a person that you love, you want to do things for the other person. You have to open up, you know. So, and the constant conversations we always had was, it is not only about thinking for yourself. It is about companionship. And that's something that
she taught me when she came into my life. मैं बहुत self-centered था उससे पहले. I could not think beyond myself. That's why I think keep saying that my life completely changed because I started looking at her. Here, what can I do for her? You know, you want to change for the person that you love, first and foremost. I think it takes a lot of courage for who you are, Virat, to say this. That so many good things happened and you were like this. And yeah, I mean, and because I know you personally, both of you, she is like that. And no, but it's important for people to understand that in our culture, in our society, women are not given credit. Women are not given enough credit. You know, in workplaces, women are not given enough credit. आप कुछ भी बात करोगे तो वो अलग ही मतलब निकालते हैं. You know, they never give credit to the woman. So it's very important for people to know that you have to respect and you have to be full for a woman who's come into your life, who's changed your life for good. उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हाँ ये तो होता ही है लाइफ में. You know, you meet a partner, you get married. हाँ यही process है लाइफ का. We never really sit down and say that, you know, I thank God with both my hands कि we found each other. Otherwise, life could have been totally different. Yeah. And not it could have gone wrong. Yeah. Yeah, it could have exactly. What you said is spot on. It could have gone totally wrong. And we men need to stand up and say that it is because of our life partners that we get that knowledge, that we get that guidance. Otherwise, there is no chance. Hey Virat, thank you so much. All the very best. Pleasure. Pleasure. Many regards to Anushka for being a sport, and you too and the whole family stay safe here. Thank you very much. Give our regards to Sonam as well, and you guys take care. I will do that. Cheers.